Okay. So everyone understood constraints, right? At least you got a background of constraint. Yes or no? Yes, sir. So constraints, it means data. You are using constraint to maintain the data integrity. Okay. So there are rules and restrictions for data. Okay. It prevents us from storing unwanted data. So it tells us what type of data should go into a table or a column. Okay, it can be applied on column level or table level. This point you will not understand right now. I'll explain it later. Constraint can be applied on one or more columns. These 2 points I'll explain you later. Okay, so everyone understood why we use constraint. Suppose there are some specific rules जो हमको rule apply करियर था. Let's say मुझे कहले कि let's say city must be, तुम चाहो city must be कटक और भुवनेश्वर. सो तुम रेस्ट्रिक्शन लगेदेव कि कटक भुवनेश्वर होते ही ओके भुवनेश्वर होते ही डेटा इनसर्ट हे अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इनसर्ट द डेटा ओके सेमती स्पेसिफिक जमती मु कहली योर फोन नंबर के नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक फोन नंबर के नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक ओके देन लेट्स से तुम चाहो कि जे जॉइन कर ही मस्ट हैव डिपार्टमेंट नंबर विदाउट डिपार्टमेंट नंबर तुम क्या जॉइन करे सो डिपार्टमेंट नंबर should not be left blank. Okay, aims of rule, there are many such rules. Okay, so se rule को जब हम implement करिया तो through constraint ही हमें करी परिया rules implement. So the next we'll jump to the next slide. So these are the different types of constraints we have. Okay, these are the different types of constraint. So first one is not null. Okay, so not null means this will not allow null values. A पर्यंत हमें देखिले we any माने any column रे हमें null value insert करी परिया, right? Yes or no? We can insert null values in any of the columns, right? Yes, sir. Okay. So now, if you apply a not null constraint, it will not allow null values. Okay. Jadi हम कुछ जगह not null constraint apply करिया, okay, we will not be able to insert null value. Okay. So I'll show you practically. Okay. So then there is another constraint which is called check constraint. So check रो माने होची it ensures all the values in a column meets the given condition. जेमती मु कहली age should be greater than 0. कि यदि एम्प्लॉई जॉब करिया चाहूँ हिज एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 18 और 20 तुम जहाँ रेस्ट्रिक्शन लगे चाहूँ सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओके कम so these are the rules you can apply so phone number length should be 10 digits suppose phone number length in India should be 10 digits so एमती टाइप रो रूल कारण जदि आम कौन लेट्स से गोटे गोटे मोबाइल नंबर अंडर मोबाइल नंबर डेटा टाइप लिखिदबा इंटीजर किंबा लॉन्ग इंट किसी भी लिखिया बट सेठी कौन होचे आमे गोटे स्मॉल 67345 मु लिखि दे परिबी ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ 9 digit ନମ୍ବର ଗୋଟେ 7 digit ନମ୍ବର ଗୋଟେ 5 digit ନମ୍ବର ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ସେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କେବେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ୟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରପର୍ 10 digit ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓକେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲକ୍ କରିଦେ ରୁମ୍ ओके क्लियर सो चेक रे आमे से कंडीशन सब चेक करि परिया मल्टीपल कंडीशंस चेक करि परिया तमे एज चेक करि परिबो एज शुड बी ग्रेटर देन सपोज कि मूवी देखिया लेट्स से मु जेमति नॉर्मली सो कश्मीर फाइल्स मनकर मूवी सो कश्मीर फाइल्स मूवी रे रिस्ट्रिक्शन थिला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एज रो पिला ही देखि परिबे से मूवी बहुत ओके तो सेति पे कि ए रिस्ट्रिक्शन ता तमे लगै परिबो ओके सो डिफॉल्ट एवरीवन अंडरस्टूड नॉट हाउ चेक थियोरेटिकली यू ऑल आर क्लियर Yes, sir. Okay, perfect. So default माने कौन ensures default value is set in a column if no value is provided. So normally कौन हुए हमें गोटे कॉलम हम पाखे अच्छे लेट्स से सिटी लिखा है ओके तमें सिटी लिखिल लेट्स से यू आर राइटिंग सिटी इज बीबीएसआर ओके कटक किछ भी हमें एंट्री करछे बट फॉर एग्जांपल जहाँ पाखे लेट्स से सिटी स्पेसिफिक सिटी नहीं फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू लेट्स से you are currently in Bhubaneswar location okay now you are relocating to Bangalore okay you are relocating to Bangalore so Bangalore रे तुमको कौन कले कि you give your residence address HR मागिला give your residence address but obviously तुम recently shift है you will not have your residence address तुम कहलो कि एबे मु currently I'm staying okay currently I'm staying at guest house
So maybe ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1 or 2 weeks ପରେ ଯେତେବେଳେ agreement ହେଇଯିବ, so I'll give you the agreement document, okay, rental agreement document, but ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। So ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସରେ କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକେଇ ଦିଅ, ଏବେ ପାଇଁ କି କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକେଇ ଦିଅ। whenever you will have this rental agreement document, so share it with us, we will update, back endରେ ଆମେ ଯାଇକି update କରିଦେବୁ। But for time being, use company address as your residence address, okay। So ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, okay, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ we don't have this residence address, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ଆମେ ଟେବୁଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା କି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନି ରେସିଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କି, ୟୁଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀର ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଡିଫଲ୍ଟ କରିପାରିବା, ଓକେ। ସୋ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ନ କରିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିଫଲ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। So this is about default constraint. So unique key constraint कौन? Unique key constraint होची जो कॉलम रे आमे unique key टा अप्लाई कले ये कौन करिवो, आउ डुप्लिकेट वैल्यूज अलाउ करिवोनी, ओके। नॉर्मली हम इंसर्ट कला 10 थर सेम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दोउथिले, बट if you apply unique key on a particular column, you can apply this on a particular column, that column won't allow any duplicate values, but it will allow a single null value, okay। गोटे null value allow करिवो, but it will not allow duplicate values, okay। Unique primary key and foreign key, that I'll explain you later, okay। So everyone understood these 4 constraints theoretically? Constraint means rules. We have these 6 types of constraints in SQL: not null constraint, check constraint, default constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint. Is this clear to all of you? I mean, these 4 constraint types you understood? Na kahar kichi question achi? Everyone understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, I'll erase this letter. So not null. Not null constraint हम देखिए. So null means तुम जाने चो missing value or blank value or no value. Null is either neither a space nor a zero. By default, all columns will accept null value. Okay. By default, SQL ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ table create କରୁଛେ, all the columns will accept null values. But ତମେ ଯଦି restrict କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, then you will have to write like this. Suppose ତମେ जो लिखुଛ id इंटीजर, ये टेबल रे देखो id इंटीजर लिखा है, साइड रे नॉट नल एमती लिखियो, एमती नॉट नल लिखला माने इट विल नॉट अलाउ नल वैल्यूज। लेट मी शो यू दैट। सुनो, okay, so suppose I'm creating a table, okay, stu, okay। So I'm writing one more st underscore address var of 100, okay। So how to use this constraint, how to apply this constraint, हमको खाली लिखिया पड़िबो, okay। कॉलम नेम डेटा टाइप साइड रे लिख दिले नॉट नल, त माने ए कॉलम आउ नल वैल्यू एक्सेप्ट करबनी, ओके। सो लेट मी रन दिस। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेबल क्रिएट हे गला, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम stu, okay, select star from stu, and now this table is created. Let me try to insert. So can I insert this record, guys? Can I insert this record?
Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, record inserted successfully. Okay. So can I? No, sir. No, sir. No, sir. Cannot insert the value null into column roll number. Can roll number रे मैं apply कर दे छे एठी ने null value accept करियोनी. Okay. So एटा में काहे देखो एठी ना तमे मार्क करथिबो किछिटा एप्लीकेशन रे सपोज नेम लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ईमेल ओके इट सब स्टार लिखा है तो स्टार माने मैंडेटरी कॉलम्स राइट बुझियला ये सुन या वैल्यू एटी स्टार लिखा है तो एटी स्टार लिखा है तो वेबसाइट रे मार्क करते हो एटी रेड स्टार मरा है तो माने दीज आर द मैंडेटरी कॉलम्स व्हिच यू हैव टू इंसर्ट एटी सेमती बाय यूजिंग दिस नॉट नल तुम एटा को मैंडेटरी कर दोछ कि नॉट नल एटी समहाउ तुमको आईडी टा दबार ही अछि यदि आईडी न दबो डेफिनेटली इट विल नॉट एक्सेप्ट ओके नल लिखला माने इट विल नॉट एक्सेप्ट एटी जदि मु लिखबी टू okay if I just write 2 this this will be inserted okay so if I'll just insert this so can you guys tell me whether this record will be inserted or not मैं एटा ऊपर को नहीं जाऊँ can you guys tell me ये record टा insert होगा कि नहीं No, sir. okay no anybody else yes or no Priti No, sir. Sushri No, sir. can someone explain me why no କାହିଁକି ହବନି ସାର୍ ସେ ନଟ୍ ନଲ୍ ଦେଇଛି ନା ଇଣ୍ଟ ରୋଲ ନମ୍ବର ଟା ତ ସେଇଠି ଆପଣ ନ ଦେଲେ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ସେଟା ଡିଫଲ୍ଟ ନଲ୍ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ହବନି yes so ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କଲମ କୁ ଓକେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଲମ କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସପ୍ଲାଏ ନ କରେନି ଏଠି ମାନେ you have only value for student name column right student name ଟା ହିଁ ଆମେ insert କରୁଛେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି so normally କଣ ହୁଏ ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଠି insert ହେଲେ ଏଠି null ପଳେଇବା କଥା ଏଠି null ପଳେଇବା କଥା right एठी नॉल जीवो ठीक अछि तमे या पे माने एड्रेस पे तमे वैल्यू स्पेसिफाई करना आई मीन ये कॉलम पे नॉल प्लेस ए कॉलम रे नॉल प्लेस हो बट ये कॉलम रे नॉल प्लेस कला को यू हैव ए रेस्ट्रिक्शन हियर राइट बुझेला यस सर सो सेति पे कि इंसर्ट हबनी ओके सो हम केमती सो एवरीवन क्लियर it's clear to everyone or any doubts any question okay so now Yes, sir. okay so now I'll show you something ଗୋଟେ ଟେବଲ ରେ ତମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ so how to know whether ଏ ଟେବଲ ରେ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ so sp underscore help okay sp underscore help ଲେଖିବ ଟେବଲ ର ନାଁ ଲେଖିଲା stu okay ଏଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କଲ ओके सेटाକୁ सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो एग्जीक्यूट कला बेलू तुम ये क्लीयरली देखिबो माने ये तीटा कॉलम नल वैल्यू एक्सेप्ट करिवे नलेबल यस नलेबल यस नलेबल यस नलेबल यस बट ये कॉलम टा देखुचो नलेबल नो ये तीनटा कॉलम रो डिस्क्रिप्शन इट बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज इट इज शोइंग यू टेबल डिस्क्रिप्शन गोटे टेबल टा केमती क्रिएट हेछि तार डिस्क्रिप्शन टा देखौछि कौन कौन डेटा टाइप निया हेछि लेंथ कौन अछि ओके देन nullable whether it is it will allow null value or not now it's showing you clear Yes, sir. okay so now we understood null value and you can apply it on every column किछि there is no such restriction name जदि not null करिया को चाहछो address जदि not null करिया को चाहछो okay name टा ideally not null होबा कता गोटे गोटे स्टूडेंट जॉइन करछि
ओके तुम एड्रेस टाकू करि परिबोनी एड्रेस टा बेले बेले तांका माने स्टूडेंट रो लेट्स मुझे जेमति गोटे एग्जांपल देली सेटे नल पकई परिया इफ समबडी डजंट हैव अ डॉक्यूमेंट तो आमे सेटी नल पकई परिया बट गोटे पर्सन जॉइन करूची गोटे ऑर्गेनाइजेशन गोटे स्टूडेंट गोटे कॉलेज जॉइन करू सो नेम इज मैंडेटरी राइट सो एटा भी आमे नॉट नल करि परिया ओके तुम टेबल क्रिएट कला बेले भी करि परिबो नॉट नल आ जदि तुम टेबल क्रिएट कला बेले करि माने अल्टर करके करिया को चाहछो तो अल्टर करके भी हमें करि परिया सिंपल अल्टर table okay table row name is student okay then alter table student here I'll write alter column st name not null alter table student alter column this is not required or what alter table student alter column what is the issue सर कॉलम टा हटेले बोधे हिजिबो कॉलम टा अल्टर हटेले कितना बोधे जो हिजिबो just a minute call लिखी ना column लिखी बस alter no okay let me check अच्छा oh shit यार I'll have to specify I think I have to specify the data type I guess let me check yes पूरा डेटा टाइप सह स्पेसिफाई करिया पड़िबो ए अल्टर रे आई गेस यस डन सो एबे तुम देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ओके एबे एठी भी हमें नल अप्लाई कर देले ये क्वेरी एबे चलीबोनी ये क्वेरी रे लेट्स से हमें रोल नंबर देले ओके रोल नंबर देले कॉमा स्टूडेंट देले एठी रोल नंबर हे गला लेट्स से रोल नंबर हे गला 5 स्टूडेंट पे वैल्यू दिया गला ओके रोल नंबर पे वैल्यू दिया स्टूडेंट पे वैल्यू दिया एबे इंसर्ट करो ओह शिट यार हाँ ठीक अच्छे नेम रे रेस्ट्रिक्शन रखी राइट सो नेम रे रेस्ट्रिक्शन रखी लेट्स एटा को रिमूव कर दोची एटा को रिमूव कर दोची ओके सो एग्जीक्यूट करो देखो सो नेम पे वैल्यू देने आमे नेम रे रेस्ट्रिक्शन रखी ना लास्ट टाइम आसी गला कोन पे कि ना नेम पे वैल्यू देइथिले करेक्ट सर सर यस तो जदि नेम कॉलम रे ऑलरेडी गोटे नल वैल्यू थांता ताहले कोन हिताले आगुरु को नबनी ताले आगुरु नबनी ताले हाँ हाँ आगुरु हाँ ओके लेट्स से এটা নল থান্তা আগুরু आ কথা ছাড় দিও এটা নল থান্তা তুমি কହୁଛ कि এই যে উপরটা अप्लाई ही থান্তা कि नहीं राइट এটা अप्लाई ही থান্তা कि नहीं ओके यस सर ऑलराइट प्रीति तुम्हें वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन ओके फाइन सपोज
ओके तमरो रेफ्रिजरेटर अछि ओके रेफ्रिजरेटर अछि ओके एतिरे आज चिकन बिरयानी अछि या किछि भी कोटे चिकन रो डिश अछि ठीक अछि तमे काली मॉर्निंग रो राति 12टा पर स्ट्रिक्ट रूल जे काली थर्सडे मे बी काली व्रत न कोन समथिंग सुदशा व्रत ओके काली टू तमे पूरा रिस्ट्रिक्शन जे फ्रीज रे नॉन वेज रहिबनी ओके ये रूल टा 12टा पर अप्लाई हो राति 12टा पर ओके काली माने राति 12टा पर अप्लाई हो ए रूल टा केतबेले अप्लाई हो जेतबेले चिकन टा को तुम आइदर कंज्यूम करो नहले थ्रो कर दो बाहर फोपाट दो राइट नहले अप्लाई करि परिबनी करेक्ट आइदर तुम ए जो अच्छे नॉन वेज डिश टाको तुम कंज्यूम करो नहले थ्रो इट आउट राइट ताहले मु रूल अप्लाई करि परिबि राति 12टा पर पूरा क्लीन करिकि पूरा आई विल नॉट कीप एनी नॉन वेज डिशेस और समथिंग ओके सो एटी कौन बुझिल को आंसर दियो तुम मते मुझे रूलटा अप्लाई कर माने नल को पूर्व ट्रिट करिया दरकार आइदर मु नल को अपडेट करी नॉले रेकर्डटा डिलीट करी बुझिल ताहले मुझे रूलटा अप्लाई करि परिबि ना मो पाखरे ऑलरेडी नल वैल्यू अछि केमति हाउ कैन आई अप्लाई द रूल मो पाखरे यदि ऑलरेडी नॉन वेज अछि आई कैन नॉट अप्लाई ए रूल आई हैव टू थ्रो इट आउट ईदर आई हैव टू थ्रो इट आउट और आई हैव टू कुक एंड इट तापर मु रूल अप्लाई करिबि फ्रिज को क्लीन करी अंडरस्टूड Okay, sir. Understood. सो पूरा ए जो अल्टर रे मुझे जेहेतु एठी गोटे कंस्ट्रेंट ऐड करछि त माने ए जो कंस्ट्रेंट अछि एठी गोटे ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो जाइछि नाउ आई वांट टू ऐड constraint to this particular column तो ସେଥିପାଇଁ କି पूरा column टा लिखिया पड़ुछि alter column student name var of 100 not null see guys don't worry about this syntax देखो एटा तो तुमको टिके complicated लागुथिबो so see understanding concept here is important nobody will ask you to write you will get everything in Google so Google ho ChatGPT ho even see even I have I have taught more than 50 times but I still don't remember this if needed I'll have to go back to Google or go back to ChatGPT and get it corrected okay so samaste even those who are architects they have been working from last 20 years 25 years semane भी syntax see concept samastung clear okay but syntax kehi mane rakhi paribeni because I have worked more than 15 tools okay I have worked in more than 15 tools so I cannot remember all the syntaxes okay so syntax ପାଇଁ କି don't worry okay so understanding concept is important ତ ଖାଲି ବୁଝି ଯିବା ଦରକାର ବୁଝିଲା ପରେ ତମକୁ ଯଦି କୋଉଠି difficult ଲାଗିଲା get this syntax copied from Google सरला okay so କିଛି ଏଥି ମାନେ ଏମିତି ଭାବନି କି ବହୁତ ହି complicated ଇଏ ତମେ you can simply copy paste it but what you are writing you should be sure of okay alter table ए table को alter करो ए column टाको हमको alter करके गोटे constant add करार अछि एटा आगुरु ये by default it was nullable it was accepting null values now just by writing this I'm ensuring that this column will not allow null values going forward ये थोरे command run कला माने आपरे null value न बने ओके क्लियर माने ए जगह I'm actually एटी null value थांता ओके प्रीति जोटा पचरलो एटी null value थांता existing एटी not this here because I'm apply करछे name रे so clear everyone Yes, sir. okay Yes, sir. इतरे बेसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसेनी एटी नॉर्मली क्वेश्चन कौन आसे आई एक्सप्लेन यू ता केते टाइप रो कंस्ट्रेंट अछि कौन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट्स कहार कौन यूज एगुडा पचरन केही कोनते सिंटैक्स लिखि दियो ओके सो डोंट वरी सो एटी हम देखो एटी यदि एग्जीक्यूट करबी यू विल सी हियर देखो you will see here now two columns roll number भी accept करनी null value name भी accept करनी null value okay এই गोटे column ही null value accept करछि so everyone understood not null constraint not null बुझिलो Yes, sir. okay perfect now let's understand check constraint so check constraint is important
So I'm creating a table, voter table. Okay. So voter one, voter, create table voter. Table is there. Voter one correct mode table create korchi, voter ID, voter name, voter age, and voter address. So, so what is the age of a voter? कौन रहे दरकार minimum age 18 18 18 रहे दरकार करेक्ट बट ए टेबल टा मु क्रिएट करले तमे कोनोसी भी लोकर डेटा एंट्री कर दे परिबो करेक्ट यस और नो कारण एज रे सेमति आज सस yes किछ नहीं राइट yes sir yes sir सो yes सेति sir पे we'll have to use check constraint okay check check bracket रे लिखिलो v underscore age greater than equals to 18 okay check v underscore age greater than 18 execute a command execute हे गला okay table create हे गला okay let me try to insert guys can I insert this record can I insert the first record Yes, sir. अच्छा ये address table रे create है नहीं so चारटा column पे चारटा value में pass कर ली okay okay so now this row is inserted okay what about this row tell me can I insert this second record No, sir. No, sir. no sir no sir execute the insert statement conflicted with the check constraint ck voter vh this ये जो नेम टा नहीं कि कन्स्टेंट रो नेम कहते को ये कन्स्टेंट रो नेम टा ना आमे गोटे आमे स्पेसिफाई करि परिया आमे निजे कन्स्टेंट रो ना दे परिया सिंस वी हैव नॉट गिवन एनी नेम टू द कन्स्टेंट एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली गोटे ना दे देछि से केम देछि जेहेतु आमे चेक कन्स्टेंट अप्लाई करछे चेक पे गोटे सीके नै जाइछि तापरे टेबल रो ना नै जाइछि वोटर 1 तापरे कॉलम रो ना नै छै vh आ एठी गोटे किछि जंक वैल्यू आसी जाइछि रैंडम कैरेक्टर्स पळे आछि ओके एसक्यूएल सर्वर तार ऑटोमेटिकली ना दे देछि since we have not specified any name from our side. So केमती तमे देखिबो देखो तमे दिन sp underscore help voter 1 select कली f5 function की 5 can you see this name can you all see this name Yes, sir. okay ये name टा automatically SQL server देछि ओके कंस्टेंट होचे चेक कंस्टेंट लागि जे कॉलम ऊपर vh कॉलम रे चेक कंस्टेंट लागि छि से कंस्टेंट रो ना ऑटोमेटिकली दैट हैज बीन गिवन बाय SQL आ एठी रूल हेछि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 okay so suppose I'm writing can I insert this yes sir Yes, sir. yes Yes, sir.
ठीक अच्छे एटा इंसर्ट है ए रेकर्डटा एरर ओके ये दुटा सक्सेसफुल इंसर्टेड अंडरस्टूड एवरीवन बुझीगला Yes, sir. okay now let me create so one more okay so let me show you one thing okay okay so एठी आम आउ गोटे टेबल मु करुच्ची वोटर टू ओके मुझे लास्ट टाइम कहली तुम तो यहाँ को इनसर्ट कला बेलू सो गोटे रैंडम एरर आसला जोटा कि समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एरर इज टिके डिफिकल्ट हो पारे ओके जो टेबल 10टा 12टा कन्स्टेंट थी को कन्स्टेंट रु एररटा आसूचे से फिगर आउट करा टे मुस्किल सो से कि तुम निजर कन्स्टेंटर ना दे पार से कन्स्टेंटर ना केमी दि जाए देख एमती मुझे लिखी ओके से कन्स्टेंट मुझे अप्लाई करी कन्स्टेंट सेटा कौन जस्ट लिखिदे चेक लिखिकी एठी कंडीशन टा पास कर देथिले बट एठी मु लिखि प्रॉपर कांस्टेंट रो ना होची ओके लेट्स से किछि भी देई परिबी मु चेक एज लिखि परिबी नॉले वेरीफाई एज लिखि परिबी लेट्स से मु लिखुची वेरीफाई अंडरस्कोर एज okay check age verify age okay any name you can give a b c d e whatever you want but the name should have some meaning verify age माने कहीं भी देखले जानी पड़ेगी कि now this constraint will check whether the age number meets certain criteria certain condition so ସେଥିପାଇଁ verify age लिखली नॉले check age एमती टाइप लिख परिबी like constraint लिखली constraint रो name define करली को टाइप रो constraint now the constraint is check constraint so check constraint bracket देली कहा ऊपर लगे भी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 okay now you have defined a constraint by giving your own name तमे निजर ना देकी स्पेसिफाई कलो एटा हे गला एटा गोटे कंस्ट्रेंट हे गला सेकंड कंस्ट्रेंट मु स्पेसिफाई करबी जे एड्रेस रे सीटीसी और बीबीएसआर छड़ा आउ को एड्रेस जीवनी ओके सीटीसी बीबीएसआर छड़ा अदर देन कटक एंड भुवनेश्वर एनी अदर एड्रेस यू एंटर इट विल थ्रो यू एन एरर so I will write same constraint and repeat the same thing constraint एठी मु लिखिबी check address होची ये पर्टिकुलर constraint रो ना ओके एठी लिखिली check ओके एठी लिखिबी v underscore add v address in हमें पढ़ी दिले राइट yes or no कटक BBSR just okay constraint check address check v address in Katak Bhubaneswar clear yes or no Yes, sir. Yes, sir. okay so let me execute this command पूरा select कर ली अरे यार okay commands completed successfully okay now if I go to this table देखो photo 2 रे देखो okay तुम देखि पारुछ कंस्ट्रेंट रो नाम जहा देछे एक्जेक्टली इट सेही ना नेम गुडा पॉपुलेट हेछ डिस्प्ले होछ या एड्रेस रे कोन रूल तमे सेट करछ एज रे कोन रूल सेट करछ यू कैन क्लियरली सी हियर राइट Yes, sir. Yes, sir. okay so let's try to insert now so let's say guys can I insert this record No, sir. सर voter to करंतु correct voter 2 कारण टेबल टा जो क्रिएट हेची voter 2 okay
Go to 2. So clearly कौच देखो it mention करछि the insert statement conflicted with the check constraint check address. Okay. So conflict occurred in master database रे voto to करी table v address column रे conflict occur होछि. Okay. But if I just write BBSR, can I insert this? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay. So everyone understood this, right? Yes, sir. yes. So this is called uh, check constraint. Check constraint माने it meets a condition or certain criteria. So तापर से value को allow करूँगी. Okay, correct. So it's clear. Check constraint ensures the all values that goes into a column meets a given condition or criteria. Criteria माने condition. Okay. गोटे रूल तुम डिफाइन कर से रूल जदि से मीट वैल्यूटा से क्राइटेरिया को मीट करुच्ची ताहले दैट वैल्यू विल बी इंसर्टेड. ओके, क्लियर? Yes, sir. Then next one is default constraint. Same हमें यूज करिया. लेट्स से सेम यूज करिया. लेट्स से लिखें emp emp join करी गोटे टेबल लिखले एम्प्लॉय जॉइनिंग. ओके, सो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस. ओके, 10 int. ओके, सो मु एड्रेस ना एठी तो ये कंस्ट्रेंट लिखुची. सो व्हाट आई विल डू हियर इज एज. ओके, एठी मु लिखबी प्रॉपर कंस्ट्रेंट ना दबार थिबो. लिखिबो कंस्ट्रेंट. ये को टाइप रो कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मु एठी किछ भी लिखि दोची. लेट्स से एडीडी लिखि दिली. कंस्ट्रेंट ना एडीडी दे देबी नले डी एडीडी दे देली. डी एडीडी दे देली. ओके, कंस्ट्रेंट ना डिफॉल्ट एड्रेस. सो डिफॉल्ट एड्रेस रे मु लिखले DEFAULT. सो एटा हला लिखली कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट रो नेम. ओके, कंस्ट्रेंट रो टाइप होची डिफॉल्ट. डिफॉल्ट रे मु लिखि देली ओके. सो यार मीनिंग होची जदि आमे कोनोसी एड्रेस जो कोनोसी एड्रेस रो वैल्यू पास करियानी ताहले इट विल गिव अस a default value that is Puri. Okay, so let me create this table. Okay, this table is created. देखो, if I just write insert statement, if I just write insert statement, insert into emp join. Okay, insert into emp join values. Okay, then 1, select star from. Okay, select star from emp underscore join. Okay, select star from emp underscore join. Okay, into insert select star from emp join, insert into emp join. Okay,
कॉलम रो ना स्पेसिफाई करछे ईआईडी कॉमा ईनेम कॉमा ईएज values. Okay, that's it. To Prakash, that's it. 25. Okay, 25. Okay, ମୁଁ ତିନିଟା କଲମ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଆଇଡି, ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀର ଏଜ୍. For which column I am not providing any value is e-address. Okay, address ପାଇଁ କୌଣସି value provide କରୁନି. So ଆଗରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ କେସ୍ ରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? null ନେଇଯାଉଥିଲା। So everyone remember this? null ନଉଥିଲା, correct? Yes, sir. Okay, so null ଆଗରୁ ନଉଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। पूरी नहीं ଠିକ ଅଛି। ठीक है सर डिफॉल्ट ठीक अच्छे तुम जो एड्रेस दौन डिफॉल्ट एड्रेस पूरी आम जो सेट करें इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू देन डिफॉल्ट एड्रेस विल बी डिफॉल्ट वैल्यू विल बी पॉपुलेटेड देयर। जदि आम निजे वैल्यू दूचे चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद ठीक अच्छे से वैल्यू गुड़ा इंसर्ट हम इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू द एड्रेस कॉलम so whichever value you have defaulted that value will be displayed. So clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now Yes. we'll see unique constraint. Okay, so unique constraint, so ये पर्यंत देखो तमे एथिरे ना एको इंसर्ट कले this is something duplicate entries, correct? So ideal in real time scenario, okay, in real world if you see let's say तुम गोटे product order करछो Flipkart रो कि Amazon रो, okay, so Flipkart रो I don't remember OD रू number start हुए, is it like that? OD रू start हुए order number, did anyone notice? Flipkart रो order कले कि Amazon रो order कले the order ID will start from OD तापर किछटा गोटे number आसे, right? Yes, sir. ओके, सो तुम केबे भी तुम देखिबो ऑर्डर आईडी केबे डुप्लिकेट होबने। तुम 10टा प्रोडक्ट आनुछ सो एवरी प्रोडक्ट विल हैव अ डिफरेंट ऑर्डर आईडी। गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे 1 लाख एम्प्लॉइज अछंती सो एवरीवन विल हैव अ यूनिक आईडी। फोन नंबर इट कैन नॉट बी डुप्लिकेटेड, राइट? योर आधार नंबर, पैन नंबर डुप्लिकेट होबार चांस ही नहीं। ओके, सो आमे एपर्यंत करूथिले because we didn't have any such restrictions, but now when we have learned this not I mean unique key, so unique key use करके हमें जदि कौन सी कॉलम ऊपर unique key apply करिया it will not allow duplicate values. Okay, so suppose I'm creating a table. Okay, it's very simple केमती unique key apply करा जाए, control C control V, suppose employee test करी गोटे column table में create करछि। Now in this column what I'll write is constraint okay, constraint रो ना होची let's say unique बैंक में लिख दोची uq anything uq id, okay, any name you can give, just I have given unique id constraint रो ना। constraint type होची यूनिक की लिखि परिबो, खाली यूनिक लिखले भी चलिबो। यूनिक की जदी लिखिया त यूनिक की लिखि परिबो, otherwise if you write only unique that is also unique key. Okay, आउ किछ लिखिया दरकार नै। Okay, so select it, select this, execute. Okay, uqid आउ को टेबल रे सेम आईडी यूज हेछि बोली के आसुनी, so uqid 1 मु लिखली। Okay, so ये 1 कारण कंस्ट्रेंट सब क्रिएट ही जाइछि थर थर तो सेति ପାଇଁ के अलाउ करने। commands completed successfully. एबे मु जति insert करिबी, okay, let me try to insert this record. Okay, 1 table रो ना होछि employee test, table को change करिया पड़िबो 1, this record will be inserted. Okay, let me try to reinsert this record, try to insert it once again. See,
Violation of unique key constraint UQID1 cannot insert duplicate key in object test table. Employee tester तमें you cannot insert duplicate value. Okay, let's say mobile number ऊपर मैं कर देली. Okay, so mobile number ऊपर एक कीटा लगे देली. आधार नंबर ऊपर let's say गोटे table रे you have lot of things like email ID, mobile number, आधार number आ ऊपर लगे परियो, right? Yes or no? See, it Yes, sir. completely depends on business to business. Ebe, let's say, okay, let's say ଗୋଟେ e-commerce site ପାଇଁ e-commerce application ପାଇଁ e-commerce application ହେଇଗଲା trading application ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର per user ଗୋଟେ ହିଁ mobile unique number ଦରକାର, right? ତମେ ଗୋଟେ user ମାନେ ତମର ହିଁ one unique mobile ଆସିଲା second user ଆଉ କିଏ ବି ହଉ ମେ ବି ତମ family member ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ number ଦରକାର, right? Yes or no? E-commerce platform हो, trading application हो, LinkedIn हो, okay, Facebook हो, ये सब जगह per person one unique number, right? गोटे mobile number दरकार है, correct? Yes, sir. Okay. ये केस रे इट इज मैंडेटरी समस्त माने एटा को तुम यूनिक लेट्स से तांकर फ्लिपकार्ट रे के अमेज़न रे के ए सब साइट रे यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई हेतु डेफिनेटली 100% यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई हेतु बट थिंक ऑफ ए स्कूल गोटे स्कूल रे लेट्स से किड 1 ओके स्टूडेंट ओके किड 2 गोटे पेरेंट रो तीन जण किड पढुचंदी ओके सो आंको केस रे फोन नंबर विल बी सेम राइट मु कोड तीनटा नंबर आनिबी यस और नो Yes. यार Yes. कम्युनिकेशन ए में मोबाइल के आसुथिबो यार भी सेम मोबाइल को यार भी सेम मोबाइल को एवरीवन अंडरस्टूड एटी मोबाइल नंबर डुप्लिकेट हेले चलिबो बट एटी डुप्लिकेट होबार चांस ही नहीं सो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस हाउ दे वांट टू इम्प्लीमेंट ओके क्लियर लेट्स से Yes, parent sir. 80 father's name mother's name it cannot be left blank or it cannot be left left blank or it has some it must have some value right so completely depend करे business to business जदि फादर नेम मदर नेम तुम नॉल भी करछो देन गार्डियन नेम मस्ट बी मैंडेटरी राइट कार लेट्स से पेरेंट जहार ना तार गार्डियन के तो जन गार्डियन एटा एटा थिबो कि नॉट नल ओके कंप्लीटली बिजनेस टू को बिजनेस रे कोन रूल इंप्लीमेंट करछुंदी से बिजनेस रूल हिसाब रे तमरो डेटाबेस आर्किटेक्ट डेटा को डिजाइन करिवो ओके सो यूनिक की एवरीवन अंडरस्टूड a unique key can be applied on multiple columns okay तमे गोटे टेबल रे you can have more than one unique keys you know multiple number of unique keys तमे जेम तुम कहली तमे ईमेल आईडी को यूनिक करिया चाहछो आधार नंबर को डुप्लीकेट एंट्री न हो बोली सेटा को करिया चाहछो देन पैन नंबर करिया चाहछो फोन नंबर करिया चाहछो नाउ इन दिस केस वी हैव फोर unique keys okay we can apply on this 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 we can apply on employee id also employee id also ठीक अच्छे yes Yes, sir. okay mouse रे-
stock. Okay, guys, I think there is some issue. Okay, so we'll continue from tomorrow. Okay, so I think it seems like there is some issue. My mouse got stuck. ठीक अच्छे कार किसी क्वेश्चन डाउट अच्छे ए भितर जहाँ जहाँ आम कवर कले wanted to show you something. Just a minute. No, I'll have to restart my PC. Okay, so ठीक अच्छे we'll continue tomorrow. Okay, sir. Okay, so thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Good night.